All right, so let's begin our lesson in which we will continue with functions. Specifically, we would look at intersection of functions. Now, I was taking this lesson with 5B और मैंने intersection of functions उनके साथ शुरू किया था. And I'm not gonna write stuff again. मैं सिर्फ वो काम करूंगा जो उनके साथ मैंने नहीं किया हुआ just to save time क्योंकि time ज़रा limited है. 40 minutes के बाद this meeting actually ends automatically, so I don't really want to waste time. आपको अंदाजा होना चाहिए दैट बिफोर ऑल ऑफ दिस हमने ये जो वर्कशीट थी ये कंप्लीट कर ली भी है आपकी क्लास में विच इंक्लूड्स क्वेश्चन 1 2 4 5 राइट. क्वेश्चन 5 के अंदर यू सॉ क्वेश्चंस लाइक दीज जिनमें हमने स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स लेना सीखा था एंड वी एक्चुअली एंडेड अप विद टू आंसर्स. सो दैट प्लीज इग्नोर दिस. दैट recap has already been done. क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो इसके थे वो टेबल्स वाले थे. क्वेश्चन 2 हमने पूरा क्लास में कर लिया था आई रिमेम्बर. क्वेश्चन 3 जो था वो आपका होमवर्क था बट आई थिंक मैंने वर्कशीट अभी अपलोड नहीं की. आई विल अपलोड दैट राइट आफ्टर दिस लेसन, तो आप वो कर लेना. टेबल वाला एक छोटा सा सवाल है, जस्ट अ रिपीटेशन ऑफ दिस. एक चीज जो मैंने 5B को बोनस में कराया था. Let's say you have the same function as this question, f of x is equal to 3x plus 3, and you have the same table also. Done. अब मेरा सवाल आपसे है ये, सॉल्व दिस गाय. नाउ जनरली मैं इस तरह के सवाल पास पेपर सेशंस में ही कराता हूँ क्लोज टू February और मार्च, लेकिन अभी ही कर लेते हैं. इट डजंट रियली मैटर. 3f of 2 minus 4. नाउ व्हेन आई डिड दिस क्वेश्चन अ ईयर अगो स्टूडेंट्स ने कहा सर ये 6f है, ये -4 है, आंसर आ गया, विच वॉज टोटली रॉन्ग. राइट. आपको सबसे पहले ये सीखना चाहिए व्हाट द हेल इज दिस f bracket 2. दिस इज f your function with an input of 2. When you give an input of 2 to your function, what's your answer? 9. इसका मतलब है जहां आपने ये लिखा हुआ देखा f bracket 2, you can replace that with a 9 because it simply says अपने फंक्शन के अंदर 2 प्लग इन करो and what's your answer? So when you plug in a 2 here, you get 9 as an answer, right? So ये f bracket 2 की जगह मैं 9 डाल सकता हूं. Next, I need to multiply it with 3, which is a 27, और फिर 4 से माइनस कर दो. So your answer for this green question is 23. So just playing with notations over here. जिस बंदे को इस नोटेशन की समझ नहीं है वो ना तो फंक्शंस का कोई भी सवाल कर सकता है और इस तरह के सवाल तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता. सो दिस इज अ पास पेपर क्वेश्चन. आई डोंट रियली रिकॉल ये कौन से साल का है, लेकिन इसी तरह का सवाल आपको आया था. आपको टेबल दिया हुआ था, फंक्शन भी आपको दिया हुआ था, या ना भी दिया हो तब भी आप कर सकते हो, एंड दिस इंफॉर्मेशन वाज एक्चुअली गिवन टू यू, राइट. एंड यू जस्ट नीड टू गेट योर आंसर. सो वी ऑफिशियली स्टार्ट इंटरसेक्शन ऑफ फंक्शंस. मेरे ख्याल से मैंने शुरू किया हुआ था, लेकिन लेट्स स्टार्ट इट अगेन. इंटरसेक्शन का मतलब है वेयर बोथ फंक्शंस मीट. इफ यू सी योर नोट्स, यहाँ इस टॉपिक की हेडिंग होगी वेयर फंक्शंस मीट. एंड आई थिंक आपकी बुक के अंदर भी इफ यू सी द चैप्टर ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस, उसके अंदर भी वेयर फंक्शंस मीट वाला ही सीन होगा. But I call it intersection of functions क्योंकि this is where two functions are actually cutting each other. Their graphs are actually meeting each other and cutting each other. Now it depends कि आपके पास functions कौन से हैं. Do you have a curve and a line, or do you have two lines, or do you have something else? So let's first talk about two lines. जब आपके पास two lines है, you can at maximum have one point of intersection, and that will be the case when you have non-parallel lines. ठीक है. So जब आपके पास non-parallel lines होंगी, you will have one point of intersection as shown in the diagram. This is an x coordinate for the point of intersection. This is a y coordinate, and that's it. This is basically simultaneous equations जो आपका intersection of lines है. अगर आपकी like if you have two lines and they are not cutting each other, इसका एक ही मतलब है, they are parallel, because parallel lines do not cut each other, they do not meet, they do not have any intersection. Okay. Parallel lines का मतलब lines that travel in the same direction. If you see my mouse, this line ये blue line के साथ parallel है, it will not meet with the blue line. Okay. But we're not going to be talking much about intersection of lines because ये बहुत basic है. It's simultaneous equations. You've been doing it since MYP 3 and maybe somewhat in MYP 4 as well. ठीक है.
सो इसी का एक सवाल इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस का मैंने आपको बताया था, और आई थिंक मैंने ये कराया हुआ भी है, सो आई कम टू दैट इन अ मोमेंट। अब हम जरा इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन और अ कर्व पे आते हैं, जो मैंने आपको शायद क्लास में बताया था कि आई विल गिव यू दिस सॉर्ट ऑफ अ क्वेश्चन इन योर एग्जाम। ठीक है। Now, if somebody is walking on this blue curve and somebody is walking on this green curve towards this direction and towards this direction, both of these people actually come to the red point. Red point ka matlab the point of intersection. Now, both of these people are standing on this red point over here. Ask yourself, इन दोनों बंदों का x coordinate क्या है और इनका y coordinate क्या है? Is it the same? Meaning, at the point of intersection, do you actually see that both graphs have the same x coordinate, both graphs have the same y coordinate, both graphs actually lie at the same point, they are representing the same point. ये जो red point है ये दोनों graphs के ऊपर है, right? Yani at the point of intersection, both graphs are equal, they have the same value, they have the same x coordinate, they have the same y coordinate. So if on these points of intersection, the red point and the black point, if I have settled on this conclusion that both graphs are actually the same, why can't I equate them? सेम होने का मतलब क्या होता है? इक्वल होने का मतलब क्या होता है? इक्वेट कर दो। अगर आपका सवाल y और y की फॉर्म में दिया हुआ है, दोनों y's को इक्वेट कर दो। अगर f ऑफ x और g ऑफ x की फॉर्म में दिया हुआ है, दोनों को इक्वेट कर दो, एंड दीज विल बी गिवन टू यू। मैं आपको नीचे जाके दिखाता हूँ। सो दिस इज ऑल थ्योरी जो नोट्स में भी है, मैंने सिर्फ यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया एज आई वाज सॉल्विंग क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट विद द इजियर केस, इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। दीज आर टू लाइंस, और देखो ये y और y मुझे दिया हुआ है। So if I want to find out the point of intersection, I'll just equate the y's. अगर आपको y और y तंग कर रहा है, एक y को आप y1 कह दो, एक को y2 कह दो, I don't mind that, okay? दोनों को equate करो। Once you equate them, one of the y is equal to 5x minus 1, यहाँ लिख दो। The other y is equal to 2x plus 5, वो यहाँ लिख दो। Bring the x's on one side, bring the numbers on the other side, x की value find out कर लो। You've done that, okay? Right? इसके बाद एक सेकंड, just give me a moment. इसके बाद this is only the x coordinate, this is not your final answer. You want the point of intersection. Point का मतलब होता है x coordinate and the y coordinate. So simultaneous equations याद करो, जब आप elimination या substitution से कोई भी एक coordinate find कर लेते थे, what did you do then? आप इस point को substitute करते हो in any equation, चाहे y1 वाली चाहे y2 वाली, I don't care, you will get the same answer. तो मैंने y1 वाली में x अपना सब्स्टिट्यूट कर दिया, सिर्फ 5 टाइम्स 2 माइनस 1 विच इज 10 माइनस 1 विच इज 9। ये भी करने के बाद आई एम नॉट डन येट। मेरा आंसर क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। कोऑर्डिनेट्स को हम हमेशा एग्जाम में ऐसे लिखते हैं, वी डोंट राइट इट लाइक दिस। सो जिस बंदे ने अपने एग्जाम में ऐसे आंसर ना लिखा, मैं उसका कम्युनिकेशन यानी क्राइटेरिया सी में एक नंबर काट लूंगा। इफ यू आर ओके विद दैट, आई डोंट माइंड इट। इफ यू नॉट ओके, तो फिर प्लीज ये मिस्टेक ना करना, राइट? एंड दैट्स प्रीटी मच इट। अगर आप लोग कहो सर आपने यहाँ क्यों सब्स्टिट्यूट किया, मैं यहाँ करूंगा, मेरी इस बंदे से लड़ाई है, ओके यहाँ कर लो। 2 टाइम्स 2 इज 4 प्लस 5, 4 प्लस 5 क्या होता है? 9। मैथ कैन नॉट कॉन्ट्रडिक्ट इटसेल्फ। नेक्स्ट अप वी मूव ऑन टू द क्वेश्चन जहां एक कर्व है और एक लाइन है। वंस अगेन हमें y और y दिया हुआ है, ओके? और मैंने दोनों को इक्वेट करना है बिकॉज आई वांट टू फाइंड आउट द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। नाउ दिस इज वेयर यू नीड टू स्टार्ट राइटिंग, बिकॉज मुझे नहीं पता कि मैंने आपकी क्लास में ये वाला कॉन्सेप्ट शुरू कराया था या नहीं। एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट कर्व और लाइन वाला, जो कि मैं आपको एग्जाम में दूंगा। मैं अभी से पेपर का एक सवाल आउट कर रहा हूँ, एंड दिस विल बी सम 7 और 8 मार्क क्वेश्चन, एंड आई विल शो यू व्हाई। सबसे पहले आपको ये दोनों इक्वेशंस दी होंगी, आपने उनको कर देना इक्वेट। यू ऑलरेडी नो द रीजन व्हाई यू आर इक्वेटिंग देम, ठीक है? जब आपने इक्वेट कर दिया, y1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 आपने यहाँ लिख दिया। y2 इज इक्वल टू 2x प्लस 7, आपने 2x प्लस 7 यहाँ लिख दिया। नाउ आई कैन क्लियरली सी दिस इज गोना मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाई? आई हैव एन एक्स स्क्वायर टर्म, राइट? और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, ब्रिंग इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में उसे लाओगे, देन यू डिसाइड कि मैं कौन सा मेथड यूज करूंगा, मिड टर्म ब्रेकिंग या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला।
सो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए you should know what the standard form is. आपको पता होना चाहिए कि the standard form is actually a form which looks something like this: ax square plus bx plus c is equal to 0. Yani everything is on one side, the left side, and the other side needs to have a 0. So I will bring everything on the left side, jaise main yahan laya hu in this step, and I'll bring the rest of the things. Uh, and nothing should be on the right side, so there should be a 0. X square minus 3x minus 4 equals a 0. This is my checkpoint. और एग्जाम में भी मैं आपको स्पेसिफिकली कहूंगा, in order to find the intersection points of the curve and a line, what's the quadratic equation that you end up with? So इस चेक पॉइंट पे रीच करने के आपके तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 3 मार्क्स होंगे. ओके, बिकॉज पहला कॉन्सेप्ट y equals to y, हैव यू यूज्ड इट? दूसरा कॉन्सेप्ट, हैव यू shown any one step of this, like even like this step or maybe this step? Okay, and the last mark is going to be for your answer. Okay, so 3 marks checkpoint. Why am I labeling this as a checkpoint? अगर ये इक्वेशन आपकी गलत हुई, you will be solving the wrong quadratic equation, you will be getting the wrong 2x coordinates, and you will hence be getting the wrong y coordinates. Hence आपका पूरा 8 मार्क का सवाल गलत हो गया. Don't blame me then. Okay, so ये check point ही असल आपकी गेम है, and you need to be careful about this. Okay, you've arrived at this checkpoint now. अब आप डिसाइड करो आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करना है या मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है. इन दिस फाइल मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दिखाया हुआ है. ओके, प्लीज इग्नोर. मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दिखाया हुआ है, सो आई वोंट बी सॉल्विंग दैट. मैं बल्कि आई यूज दिस टाइम टू डू मिड टर्म ब्रेकिंग, ताकि इस फाइल के अंदर ना दोनों चीजें एक रिवीजन के तौर पे आ जाएं. राइट, सो आपके पास ये इक्वेशन है. सबसे पहले चाहे मिड टर्म ब्रेकिंग हो चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो, आपने ए बी सी आइडेंटिफाई करना होता है. सो ए इज 1, बी इज -3, सी इज -4. डन. ये फॉर्मूला आपको बुकलेट में दिया होगा. दिस विल बी गिवन इन द एग्जाम. आपने सिर्फ बुकलेट खोलनी है. यू नो वेयर टू फाइंड इट ऑन असेस प्रेप, एंड यू शुड नो कौन से पेज नंबर पे ये फॉर्मूला किस तरह दिया हुआ है. यू डोंट नीड टू टाइप इट इन द एग्जाम. एग्जामिनर को पता है कि फॉर्मूला क्या है. डोंट ट्राई टू टीच हिम. ओके, ओवर ओवर एफिशिएंट या ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना. अमार, आई होप यू आर लिसनिंग. सो बी इज -3. बी की जगह मैंने -3 डाल दिया. दिस माइनस साइन एंड दिस माइनस साइन बोथ आर सेपरेट, इन्हें मिला नहीं देना. बी स्क्वायर वंस अगेन -3 स्क्वायर विच विल बी अ 9. -4 AC, A is 1, C is -4, divided by 2A, A is 1. Done. -3 क्या होता है? 3. -3 स्क्वायर क्या होता है? 9. 4 into 1 into 4. 4 times 1 times 4, that's a 16. But how do I decide कि यहाँ plus आएगा या minus? That's really easy. How many minus signs do you come across while you do this multiplication? 1 and 2. Two negatives make a positive. अगर यहाँ एक नेगेटिव होता या 3 नेगेटिव्स होते, मैं यहाँ नेगेटिव लिख देता. ओके, सो 9 plus 16, that's a 25. 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5. सो मैंने डायरेक्टली 5 लिख दिया. डू यू सी दैट? मुझे कोई वर्किंग शो करने की जरूरत नहीं. Now I have to make two branches. 3 plus 5 divided by 2, 3 minus 5 divided by 2. Done? And I have two answers. Once I have two answers, I'm not done yet. ये आपके दोनों x coordinates हैं. How do you find their corresponding y coordinates? You are allowed to substitute these answers into any equation you like. But as a common sense rule, would you like to substitute them in the creepy looking equation या easy looking equation? Definitely the easy looking one, जिससे आप तकरीबन mentally भी अपने आंसर निकाल सकते हो. So I will substitute both of the x coordinates separately into this equation because it's much simpler. मुझे कोई square नहीं लेना, कोई minus minus नहीं करना, कुछ नहीं करना. Okay, so I'm substituting both answers into this guy. पहला आंसर which is x equals to 4 मैंने यहां substitute किया, मेरा ये आंसर आ गया. Done. Hence my point is 4,15. 4,15. Done. मैंने दूसरे x कोऑर्डिनेट को यहां सब्स्टिट्यूट किया, मेरा 5 आंसर आया, which means -1,5. These are my points of intersection. जिस बंदे ने इस तरह आंसर ना दिया, उसका एक और एक 2 नंबर इस केस में कट जाएंगे. Now, for those of you who want to do midterm breaking but don't know where to start, this is just gonna be a recap 2 minutes of midterm breaking. So just hold up with me on this. So a recap of midterm breaking.
इसके बाद हमने इस सवाल को ना एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, बिकॉज आहिस्ता आहिस्ता हम MYP 4 के अंदर हमने और डिग डीप करना है, राइट? एंड इट इंक्लूड्स ऑल ऑफ दोस स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। सो अगले एग्जाम्पल में ना आपको वो सारा सीन समझ आ जाएगा, राइट? Recap of midterm breaking. Now you should know that your equation is y equals to x square minus 3x minus 4. ओहो, ये क्या हो गया? Y equals to तो था ही नहीं. By the way, if anyone has any questions, please मुझे रोक के पूछ लेना, okay? ये सारी, ये जो वन नोट की फाइल है एंड जो लेसन रिकॉर्डिंग है वो सब आप पे शेयर हो जाएगा, बट दैट डज नॉट मीन दैट यू बिकम कंप्लेसेंट एंड स्लीप थ्रू दिस क्लास, क्योंकि यू विल मिस अ लॉट. ओके, लेट्स Where बिगिन. will we revise like everything for quadratics? या एग्जैक्टली, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता लेके चल रहा हूँ. वो पिछले जो फंक्शंस की वर्कशीट थी, वी रिवाइज्ड. याद करो जब हमने क्वाड्रेटिक का चैप्टर शुरू किया था, आवर फर्स्ट कॉन्सेप्ट वाज टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. जो फंक्शंस वाली वर्कशीट है उसका क्वेश्चन नंबर 5, इफ यू लुक एट इट एंड मे बी द लास्ट पार्ट ऑफ 4, हमने उसमें स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स की 2 एग्जांपल की थी, इन विच वी हैड 2 आंसर्स, राइट? अब ये एग्जांपल, ये जो ये है, मैंने इसमें आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की एक पूरी सोल्यूशन दिखा दी, एंड आई एम गोना शो यू मिड टर्म ब्रेकिंग. ओके, एंड दिस इज गोना कंटिन्यू. मैं एक और एग्जांपल भी कराऊंगा. ओके, सो आहिस्ता आहिस्ता वी विल कवर ऑल ऑफ दोज एस्पेक्ट्स जो स्पेसिफिकली आपके दिसंबर एग्जाम में आएंगे, सो दैट नथिंग सरप्राइजेस यू. अब मिड टर्म ब्रेकिंग में जस्ट लाइक द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो व्हाट इज ए, व्हाट इज बी, ओहो, व्हाट इज बी and what is C. Okay, C is -4. Done. But there is also one extra step. You need to do A multiplied by C, which is equal to 1 multiplied by -4, which is -4. Focus on this number. Give me two numbers that multiply to give me -4. Okay, two numbers that multiply to give me -4, multiply to give -4. 1 and -4. Yeah, exactly. But the condition does not really end here. Give me two numbers that multiply to give me -4 and also add to give me this b over here, which is a -3. Right? So, let's start. अभी मैं साइंस पे नहीं जा रहा. Let's start off with this number 4. मैं साइंस को भी भूल गया हूँ. Okay? हमने 4 अचीव करना है बाय मल्टीप्लाइंग टू नंबर्स. सबसे पहले 1 मल्टीप्लाई बाय 4. लेट्स स्टॉप ओवर हियर. एक मेरे पास ये ऑप्शन है और एक 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है. ओके, इस बंदे को मैं नहीं चूज करूंगा ड्यू टू रीजंस. मैं 1 मल्टीप्लाई बाय 4 को चूज कर रहा हूं. लेट्स सी व्हाई. ओके, सबसे पहले मैंने नंबर्स तो चूज कर लिए. अब मैं साइंस को जरा देखता हूं. आई नीड अ नेगेटिव आंसर. दो चीजों को जब आप मल्टीप्लाई करो, हाउ डू यू अचीव अ नेगेटिव आंसर इफ ओनली वन ऑफ देम इज नेगेटिव? लेकिन कौन से नंबर को मैं नेगेटिव करूं? 1 को नेगेटिव करूं या माइनस या 4 को करूं? आप सेकंड कंडीशन को चेक करो. इज योर आंसर नेगेटिव? यस, यानी जब दो नंबर्स को आप ऐड करो यू गेट अ नेगेटिव आंसर. इसका मतलब है द ग्रेटर अमंग देम वाज नेगेटिव. ओके, सो दिस इज व्हाट हेल्प्स मी डिसाइड कि -4 नेगेटिव होगा और 1 पॉजिटिव होगा. वंस अगेन, दोबारा AC आपने -4 निकाल लिया. टू नंबर्स दैट मल्टीप्लाई टू गिव यू -4 एंड ऐड टू गिव यू द B विच इज -3. ओके, सबसे पहले साइंस को भूल जाओ, सिर्फ 4 पे फोकस करो. गिव मी टू नंबर्स दैट मल्टीप्लाई टू गिव मी 4. 1 इंटू 4, 2 इंटू 2. चलो मैं 1 इंटू 4 से शुरू हुआ. ओके, यू नीड टू नंबर्स दैट मल्टीप्लाई टू गिव यू अ नेगेटिव नंबर. ये पॉसिबल ही नहीं कि दो नंबर्स पॉजिटिव हो, वो मल्टीप्लाई हो रहे हो और आपको नेगेटिव आंसर मिल रहा हो. नॉट पॉसिबल. ये पॉसिबल ही नहीं कि दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो, दोनों नेगेटिव हो और आपको नेगेटिव आंसर मिल रहा हो. नहीं होता. नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव इज पॉजिटिव. द ओनली वे यू कैन गेट अ नेगेटिव आंसर आफ्टर मल्टीप्लाइंग टू नंबर्स इज वन ऑफ देम नीड्स टू बी नेगेटिव. लेकिन कौन सा? द सेकंड कंडीशन कैन एक्चुअली हेल्प मी आइडेंटिफाई दैट. Those two numbers should add to give you -3, which is a negative number. अगर मैं -1 को नेगेटिव कर दूं, मेरा आंसर इन्हें ऐड करने से +3 आता है. 4 - 1, दैट्स अ +3. तो ये तो नहीं हो सकता. दैट इज वाई आई विल बी चूजिंग 1 and -4. And these will fulfill both conditions. -4 multiplied by 1
इट्स अ -4 डन। -4 +1 दोनों को ऐड किया या 1 प्लस -4 बात बात एक ही है, आपका -3 आंसर आता है। सो दीज टू नंबर्स फुलफिल बोथ कंडीशंस। I found those two numbers that I can break my middle term with, which is 1 and -4. So writing my equation again, x square minus 3x minus 4 is equal to 0. That is why I call the quadratic formula as a cheat code कि blindly आपने एक formula में plugging in करनी है without any understanding. So even a layman can do it. जबकि मिड टर्म ब्रेकिंग में ये जरा टेक्निकलिटी आती है। ओनली डू इट इफ यूर कंफर्टेबल एंड रियली फास्ट एट इट, वरना आई वुड सीरियसली एडवाइज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को तेज करने की प्रैक्टिस कर लो, बिकॉज दैट्स गोना बी द अल्टीमेट चीट कोड। राइट, let's break this middle term into x minus 4x, okay, because 1 minus 4 is a 3, sorry, 1 minus 4 is a minus 3, x square plus x minus 3x minus 4 is equal to 0, okay। आप इसे -3x प्लस एक्स भी कर सकते थे, दिस ऑर्डर डज नॉट मैटर, ओके, जिस ऑर्डर में मैं लिख रहा हूं। अच्छा जी, सबसे पहले कॉमन क्या है? Sir, I don't get it. सॉरी, Why is it सॉरी सॉरी, x एक minus 3x? एक एक गलती हो गई है, इट्स x -4x, सॉरी। अब आपको समझ आ गई? I still don't get it. आपके Oh my मेथड का God, नाम stop क्या है? everything. एक सेकंड, आपके मेथड का नाम क्या है? मिड टर्म ब्रेकिंग, राइट? यू नीड टू ब्रेक दिस Yeah. मिडल टर्म इनटू टू थिंग्स। वो कौन सी दो दो चीजें हैं? दीज टू नंबर्स। Break your middle term into these two numbers. So isn't it just supposed to be 1 minus 4? Exactly. अब 1 - 4 तो नहीं होगा, आप -3x को ब्रेक कर रहे हो, -3x को। Can So I every write? time it's supposed to have an x besides it? Exactly, x will be beside it. मैंने middle term को break करना। How can I break -3x into, let's say 1 - 4? ये तो इक्वल ही नहीं है। 1 - 4 is 3, सॉरी, 1 - 4 is -3, जबकि यहाँ -3x है। x कहाँ गया? आपकी दुश्मनी तो नहीं है x से, यू नीड टू राइट दैट, ओके। सो ब्रेक द मिडल टर्म using these numbers, term using So it's the like x squared plus 1 minus 4. एग्जैक्टली अब एक्स स्क्वायर प्लस 1x में 1x लिखता नहीं, लेकिन आपके कहने पे चलो मैं लिख देता हूं, ओके। -4x इज इक्वल टू 0। मैं इसे -4x प्लस एक्स भी लिख सकता हूं, डज नॉट मैटर, ओके, ये ऑर्डर मैटर नहीं करता। अब आप अपने आप से खुद पूछो, लाइक आस्क योरसेल्फ, +1 और -4 क्या होता है? इज इट अ -3? हैव आई कमिटेड एनी वायलेशन? मैंने सवाल को चेंज नहीं किया। दिस इज अ डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग -3x। आई डिड नॉट चेंज एनीथिंग। 1 - 4 -3 होता है, 1x - 4x -3x होता है, मैंने कुछ चेंज नहीं किया। यू आर वेरी वेल अलाउड टू कंबाइन दीज एंड गेट टू योर प्रीवियस स्टेप, चेक कर सकते हो आप, ओके। सो आई हैवंट चेंज्ड एनीथिंग, राइट। नेक्स्ट, look at the terms on the left side, x square and 1x. Is there anything a common in between these two? That's your second step. X square और x में common क्या होता है? Just an x, okay? And X. that's gonna be x plus 1. Done? माइनस साइन जैसे यहां लिखा हुआ है इधर कॉपी कर दो। 4x और -4 में क्या कॉमन होता है? जस्ट द नंबर 4, ओके। और यहां भी अंदर आपका x+1 आएगा। नाउ इफ यूर कंफ्यूज कि सर यहां माइनस है यहां प्लस कैसे हुआ, लेट मी टेल यू द ट्रिक फॉर दैट, ओके। सबसे पहली चीज यू शुड नो इन मिड टर्म ब्रेकिंग, बोथ ब्रैकेट्स नीड टू कंटेन द सेम नंबर, सॉरी, both brackets need to contain the same things in it. अगर पहली ब्रैकेट में आपने डिसाइड कर लिया कि x+1 आएगा, दूसरी में भी x+1 आना चाहिए। अगर ना आया, यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। नाउ हाउ डू यू सी कि ये जो आपने x+1 लिखा, दिस इज एक्चुअली ट्रू? व्हाई डोंट यू रीओपन दीज ब्रैकेट्स? -4 इंटू एक्स क्या होता है? -4x। -4 इंटू +1 क्या होता है? -4। आई एम नॉट कमिटिंग एनी वायलेशन ओवर हियर, मैंने तो कुछ चेंज किया ही नहीं, राइट? So I am right. These are the checks that you put on yourself, चेक करने के लिए कि क्या आप ये स्टेप ठीक कर रहे हो या इज देयर सम मिस्टेक। सो इट्स अ सेल्फ करेक्टिंग सॉर्ट ऑफ अ मेथड। हर स्टेप पे आप अपने आप से कुछ सवाल पूछते हो, एंड इट्स रियली इम्पॉसिबल टू गेट अ मिस्टेक इन दिस।
right? Can I take both brackets out as a common? X plus 1 is taken out as a common. X minus 4 that is left. अगर आपने दोनों brackets को common बाहर ले लिया, what's left now? X and minus 4. ऐसे ही ना? So put these two things in the second bracket, x minus 4. And that's it, equal to 0. Now this is the null factor law, शायद आपको याद हो MYP4 से. Two things multiply to give you a 0. इसका क्या मतलब है? Put each of them equal to 0 separately. यानी I will put both brackets equal to 0 individually. पहले मैं इस ब्रैकेट को इक्वल टू 0 पुट करूंगा, फिर इस ब्रैकेट को इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा. सो x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. ये एक आंसर की लोकेशन होगी. एंड द सेकेंड आंसर इज गोना बी x minus 4 equals a 0. This will give me an answer x equals to minus 1, right? And this will give me an answer x equals to 4. अब मैं जरा scroll up करता हूं to show you that my answers are absolutely the same. 4 और minus 1 है ना? जल्दी से मैं scroll up करके आपको दिखा देता हूं. What are these answers? 4 and minus 1. Now it's up to you to decide कौन सा method simple है. There is also a shortcut for midterm breaking जो मैं आपको ना दिखा देता हूं. If you revisit your MYP4 notes उसके अंदर भी है, but it's a good thing कि हम यहाँ revise कर लें. Okay? मैं ना यहाँ जरा लाइन ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा सा और नीचे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ. ऑलराइट, इज देयर अ चीट कोड फ्रॉम फॉर getting from this step directly to this step over here? Is there a cheat code by missing all of the steps in between and getting to these steps really just in one go? I need a cheat code. Okay, और वो क्या होगा? That's the main thing. मैं ना जरा इस एरो को भी ना यहां मिला देता हूं. So I need a cheat code जो इन सब steps को evade कर दे and I directly get to this bottom step. Running out of time. I know I only have 10 minutes. 10 minutes में वैसे भी lesson खत्म हो जाएगा. Right. Let's do this. So all you need to do is when you're on this first step, you need to decide वो कौन से दो numbers हैं जिनसे मैंने अपनी middle term को break करना है. Right? So you've decided on the two numbers that you are gonna break your middle term with. Those were minus 4 and 1. ठीक है? You've decided that. Okay? So I want you to do the following. Open up two brackets, right? दो brackets open करो और equal to 0 put कर दो because equal to 0 is generally there. दोनों bracket में x लिख दो. Done? एक ब्रैकेट में प्लस 1 लिख दो because one of the numbers is a plus 1, right? एक में प्लस 1 लिख दो और एक में minus 4 लिख दो. Done. That's it. कोई वर्किंग करने की जरूरत नहीं. So what was the method number 2? All you need to do is identify the two numbers that you're going to break your middle term with. Those were 1 and minus 4, right? मैंने 1 और minus 4 यहाँ लिख दिया. Open two brackets. दोनों में x और x लिखो. एक में plus 1 लिख दो, एक में minus 4 लिख दो. The end. और आगे तो आपका स्टेप सारा सेम है. You are gonna split into two parts. दोनों brackets को equal to 0 put करो and you are gonna get your answer. But there is a catch to this. This method only works अगर आपका a1 है. You don't have a coefficient of x square other than 1. Okay? So मैं यहां लिख देता हूं. Please, this method only works. This method, और ये आपके नोट्स के अंदर है. इफ यू रिविजिट द MYP4 नोट्स, ओनली वर्क्स इफ a is 1. You should know what a is. If a is equal to 1. Do not use this method अगर फर्ज करो यहां 3x स्क्वायर होता. नो, डोंट यूज दिस डायरेक्ट मेथड. आपको इस तरह चलना पड़ेगा. यहां को डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो. ओके, सो दैट्स प्रीटी मच इट. राइट, अब हम चलते हैं अगले लेवल के सवाल पे. मैं आपको उसका स्टार्टिंग पॉइंट दे देता हूं, आपने उसे खत्म खुद करना है. ओके, सो आई शेयर दिस फाइल विद यू. ये आपके पास एज अ रिसोर्स होगी और हम अगले सवाल पे जाते हैं. ओके, दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन. एग्जाम में ऐसा आया हुआ है, सो आई लेबल दिस एज अ पास पेपर क्वेश्चन. राइट, find the point of intersection of the following.
the following functions. Let me use the word functions now. Right. So my function is f of x is equal to, let me just open my phone and see that मैंने तस्वीर ली थी. And let me just see that. Okay, so my camera shows that the function is, yeah, this thing. So standard form की जगह ना अब मैं आ गया हूँ vertex form में. याद होगा शायद आपको, ये चीजें आपने देखी हुई हैं. दूसरा फंक्शन क्या है? g of x is equal to 2x minus 7. A curve and a line cutting each other to give you 2 points of intersections. Now, obviously, आपको method तो आता है. I won't really waste time because we just have 6 minutes. मैं time नहीं ज़ाया करूँगा. Can anyone quickly tell me what's my method? मैं क्या करूँगा in order to start, in order to find the points of intersection? What's my basic understanding? क्या करूँगा मैं इन दोनों के साथ? Anyone, please. Time आपका ज़ाया हो रहा है. We don't have time. Please speak. So you guys are actually okay कि आपका time ज़ाया हो रहा है. Please, anyone? What was the question? ये मेरा सवाल है. Find the points of intersection of the following functions. What's my starting point? क्या करूं मैं इनके साथ? Uh, Come on, come on, come on, come on, come on. Intersection of functions में हम एक ही तो काम कर रहे हैं. There is only one starting point for all types of questions like this. क्या होता है वो? एक मिनट आपने सक्सेसफुली जाया कर दिया. you find x? क्या मतलब find x? How the hell do I find x? कैसे? अच्छा चलो, you are right. I find x. That's absolutely true. कैसे? Starting step क्या है मेरा? What do I do? कैसे x find करूं? That is right. मैंने पहले x ही find करना है. कैसे? कैसे start करूं? You पहले क्या set लिखूं? x to 0? No, no. इंटरसेक्शन ऑफ फंक्शंस के टॉपिक को मैंने शुरू कैसे किया था? मैंने पूरी स्टोरी आपको बताई थी. दो लोग आपके ग्राफ पे चल रहे हैं. दे स्टैंड एट द कॉमन पॉइंट. एट दैट कॉमन पॉइंट व्हाट हैपेंस? दैट इज व्हाई आई डू दिस स्टार्टिंग पॉइंट स्टेप. वो क्या होता है? प्लीज समबडी टेल मी. Forgot. नो, यू कैन नॉट फॉरगेट. चलो मैं आपको थोड़ा सा ऊपर करके एक स्पीक दे देता हूँ. स्नीक पीक. ओके. जब मेरा ये सवाल था मैंने क्या किया था? Did you get the x4 and put it in and then find the answer? नो. यार मैंने सवाल अपना स्टार्ट कैसे किया था? तुम तो यहाँ कह रहे हो तो यू गेट द एक्स समहाउ, यू प्लग इट इन और आंसर. हाउ डू आई गेट द एक्स इन द फर्स्ट प्लेस? मेरा You स्टार्टिंग स्टेप क्या है? you changed it in the quadratic form equation thing? Like you इवन open इवन इवन बिफोर दैट, हाउ डू आई गेट द क्वाड्रेटिक फॉर्म थिंग? ये मैंने अचीव कैसे किया? you open the bracket. कौन सी ब्रैकेट? अच्छा वो मेरे सवाल में ब्रैकेट है, बट यार ये आपको नजर नहीं आ रहा? व्हाट द हेल इज दिस? स्टार्टिंग स्टेप क्या है आपका? Substitute the answers. यार, I was actually looking for these words. These words. These words. Intersection of functions आपका एक ही basic principle पे lie करता है, that you understand in order to find the points of intersection. Points of intersection के ऊपर both graphs are exactly the same. They have the same value. They have the same x coordinate. They have the same y coordinate. They're practically the same. Same होने का मतलब maths में क्या होता है? Equate कर दो. They are equal. So why can't I equate my equations? I just need these words. मैं So do you हर realize सवाल that में. nobody listens during online classes? यार, come on यार, please. I know it's Can hard. we just do this on Monday? I forgot everything. I wasn't focusing. कुछ नहीं होता. रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी. आप लोग इंस्टाग्राम रील्स की बजाय मेरी रील्स ये देखना, ठीक है? 30 मिनट की रील होगी. Anyways, so the basic underlying principle is if I start to write down my answer, you just equate both equations, man. कह कह के थक गया हूं मैं.
right? At the point of intersection, both functions are the same. Done. Okay. One. Now 2 minutes are left. Now you will see that I will reach a bottleneck. Bottleneck क्या होगी? यहां मैंने लिख दिया x-3 whole square minus 4 done is equal to 2x minus 7. अब मुझे बताओ ये स्क्वायर ब्रैकेट है. आई नीड टू ओपन दिस स्क्वायर ब्रैकेट. डू यू नो हाउ टू ओपन स्क्वायर ब्रैकेट्स? कुछ याद है MYP4 से? x-3 Is होल it स्क्वायर. इसे मैंने ओपन 4x किया. minus 9? X गलत. square plus 9. गलत है. स्क्वायर. अच्छा, लेट मी गिव यू अ हिंट. क्या मैं स्क्वायर ब्रैकेट को, स्क्वायर का मतलब क्या होता है? द सेम थिंग मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ ट्वाइस. ऐसे ही है ना? कैन आई राइट इट लाइक दिस? यानी द सेम थिंग मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ ट्वाइस. ऐसे ही है ना? इसमें तो कोई इश्यू नहीं है ना जो मैंने ब्लू में लिखा है. X squared plus 9? It's not x square plus 9. Bro, how the hell do you open double brackets? कुछ याद आया? Let me draw some lines. Select the first term, multiply with everything in the second bracket. Done? So x multiplied by x square. X multiplied by minus 3, that's a minus 3x. Done? Now select the second term in the first bracket, which is this one, minus 3. Multiply with everything in the second bracket. Minus 3 multiplied by x क्या होता है? Minus 3 multiplied by x. That's a minus 3x. Minus 3 multiplied by minus 3, that's a plus 9. फाइनल आंसर क्या हुआ? फाइनल आंसर मैं ब्लू के अंदर लिखता हूं. द वीडियो इज गोना एंड रियली सून. एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9. इस ब्रैकेट की जगह आपको ये चीज लिखनी पड़ेगी. एंड देन यू कंटिन्यू सॉल्विंग योर क्वेश्चन.